दिस इज़ द Oppo A9 2020। ये Oppo का लेटेस्ट फ़ोन है और इसकी प्राइस है अराउंड 46,000 रुपीज़। Essentially the biggest thing you need to know about this phone ये है कि ये पावर यूज़र्स के लिए और गेमर्स के लिए है। इसके अंदर एक मैसिव 5000 मिलियन पावर बैटरी है। नॉर्मल यूज़ के ऊपर आप इसको आराम से 2 दिन या अगर आप लो यूसेज पे इस्तेमाल करते हैं तो आप इसको 3 दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले कि हम इस फ़ोन के बारे में इन डिटेल बात करें, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरा पेज लाइक कीजिए। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दी Oppo A9 2020। बिल्ड क्वालिटी वाइज मैं इस फ़ोन से बहुत खुश हूँ। इट लुक्स रियली फैंटास्टिक। इसकी जो बैक है वो एक ब्लू और पर्पल ग्रेडियंट के अंदर आती है या आप इसको ग्रीन कलर में भी ले सकते हो। आई हैव द ब्लू वन। इवन दो इसकी साइड्स और बैग जो हैं वो कम्प्लीटली प्लास्टिक की बनी हुई है, इट स्टिल फील्स रियली गुड इन द हैंड, लाइक दे आर यूजिंग क्वालिटी मटेरियल्स। आई लव हाउ द लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑन द बैक। मैं हमेशा मेंशन करता हूँ कि आई लाइक फ़ोन दैट लुक डिफरेंट एज फील डिफरेंट, और ये फ़ोन जो है वो भी इसी तरह ही है और ये स्टैंड आउट करता है। सो अगर आप मेरी तरह हैं और आपको डिफरेंट लुकिंग फ़ोन पसंद है तो आई थिंक यू विल बी हैप्पी विद दिस फ़ोन। फ्रंट पैनल के बारे में बात करते हैं। इस फ़ोन का जो फुटप्रिंट है वो काफ़ी बड़ा है। इट्स अ 6.5 इंचेस डिस्प्ले और इसके ऊपर एक छोटी सी नॉच है एंड देयर इज अ चिन एट द बॉटम। एक इम्प्रूवमेंट जो इन्होंने Oppo F11 से इसमें की है वो ये है कि इस दफ़ा दे आर गिविंग अ USB Type-C पोर्ट इंस्टेड ऑफ Micro B। आई प्रेफर USB Type-C ओवर Micro USB एंड आई एम ग्लैड कि फाइनली Oppo अपने मिड रेंज फ़ोन्स के अंदर Type-C पोर्ट दे रहा है। ओवरऑल आई रियली लाइक हाउ दिस फ़ोन लुक्स। जो इसकी बैक है वो बहुत विजुअली अपीलिंग है। इट लुक्स ग्रेट एंड द नॉच इज़ रियली टाइनी। तो ओवरऑल इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ फ़ोन दैट लुक्स ग्रेट देन आई थिंक यू कैंट गो रॉन्ग विद दिस फ़ोन। परफॉर्मेंस जो है वो इस फ़ोन का बिगेस्ट फीचर है। इट प्रोमिसेस ग्रेट परफॉर्मेंस एंड ग्रेट बैटरी फॉर पावर यूजर्स एंड गेमर्स। सो इसके अंदर एक स्नैपड्रैगन 655 जो कि एक 11 नैनोमीटर प्रोसेसर है एंड इट्स अ ग्रेट मिड रेंज प्रोसेसर। हाउएवर क्योंकि इस फ़ोन की स्क्रीन 720p रेजोल्यूशन है, द डिस्प्ले डजंट कॉज रियली दैट मच स्ट्रेन ऑन द प्रोसेसर, सो यू आर एबल टू गेट मच बेटर परफॉर्मेंस कंपेयर टू अदर फ़ोन्स इस प्राइस के अंदर। तो आप इसके ऊपर कोई भी ऐप या कोई भी गेम, नो मैटर हाउ ग्राफिकली इंटेंसिव इट इज़, वो आप इस पर आराम से खोल सकते हो एंड दिस फोन इज़ गोइंग टू नॉक इट आउट ऑफ द पार्क। दिस इज़ वाई आई बिलीव कि PUBG के लिए दिस इज़ द बेस्ट फ़ोन। यू नो PUBG इज़ एन इंटेंसिव गेम एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ बैटरी एज वेल, लेकिन क्योंकि इस फ़ोन की स्क्रीन ज़रा लोअर रेजोल्यूशन है और इसकी बैटरी काफ़ी मैसिव है, यू कैन ईजिली प्ले द गेम फॉर लिटरली आवर्स ऑन एंड विदाउट एनी लैग और एनी प्रॉब्लम्स एंड स्टिल हैव अ लॉट ऑफ बैटरी लेफ्ट। और इसके अलावा दिस हैज़ डॉल्बी सराउंड साउंड एंड स्टीरियो स्पीकर्स। सो गेमिंग के अंदर यू गेट दिस रियली इमर्सिव एक्सपीरियंस जो कि मुझे बाकी फ़ोन्स पे नहीं मिला इस प्राइस रेंज में। एंड बिकॉज ऑफ दिस वॉचिंग मूवीज़ और TV इज़ ग्रेट ऑन दिस फ़ोन। और द क्वालिटी ऑफ द डिस्प्ले इज़ डिसेंट। द कलर्स लुक ग्रेट बट दे आर नॉट एज सैचुरेटेड एज आई वुड लाइक। ओवरऑल आई डोंट थिंक एनी अदर फ़ोन इन दिस प्राइस रेंज आपको इतनी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। सो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। I think if you are a power user or a gamer, you will be extremely happy as well. Software wise फ़ोन के अंदर Android 9 और Color OS है। Color OS के बारे में बात करते हैं। I feel like Color OS is in a transitionary period. आपको याद होगा कि Samsung फ़ोन्स के अंदर एक टाइम पे TouchWiz होया करता था, which was not a good skin at all. लेकिन after TouchWiz there was Samsung Experience, which was a lot better. और अब they come with One UI, which we all know is great. Color OS is in a similar position. I didn't like the older version of Color OS at all. It was very limiting. लेकिन now Color OS 6 is a lot better. But अभी भी there's still a long way to go. Visually ये बहुत अच्छा है. The icons are very well designed and finally there's an app drawer. Oppo F11 Pro के रिव्यू के अंदर I explained why Google's gesture navigation और जो gesture navigation उस फ़ोन में थी that was fundamentally broken. और इस फ़ोन के साथ दे हैव फाइनली फिक्स दैट। दे इंट्रोड्यूस देयर ओन जेस्चर नेविगेशन जो कि बहुत बेहतर है। सो यू स्वाइप अप टू गो होम, यू स्वाइप अप एंड होल्ड फॉर रीसेंट्स, यू स्वाइप अप फ्रॉम द साइड्स टू गो बैक। फास्ट है, इंटुइटिव है एंड इट वर्क्स। सो ग्रेट जॉब Oppo। द एनिमेशंस इन जेस्चर नेविगेशन आर आल्सो रियली ग्रेट। दे मेक द फोन फील स्नैपियर एंड मच मोर रिस्पॉन्सिव।
लेकिन जो रिसेंस की एनिमेशन है दैट इजंट एज फ्लूइड एज समथिंग लाइक Huawei और Xiaomi's. बट खैर, दिस इज़ अ ह्यूज स्टेप इन द राइट डायरेक्शन और आई फील लाइक विथ मोर अपडेट्स इज जस्ट गोना गेट बेटर. सो अगर आप ये फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आई वुड एडवाइज यूजिंग जेस्चर नेविगेशन इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल सॉफ्ट कीज. इट इज़ रियली अ बेटर एक्सपीरियंस. अब बात करते हैं कलर OS की बिगेस्ट प्रॉब्लम, द नोटिफिकेशन सेंटर. To Oppo's credit, the notification center does look good. It's very clean, the toggles are very well designed, lekin it's just not efficient. Basically, the toggles are taking too much space and the placement of notifications is all wrong. एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपना फ़ोन निकालें and open the most used apps और देखें कि कंटेंट कहाँ से शुरू होता है. You'll see that the content the app wants you to see is not at the very top, but it's slightly lower than the top. ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है. ऐप डिज़ाइनर्स डू डैट बिकॉज व्हेन यू टर्न ऑन योर फ़ोन नेचुरली आपकी आंखें इसी एरिया पे जाती हैं. यू डोंट लुक एट द टॉप मोस्ट साइड, यू डोंट लुक एट द बॉटम मोस्ट साइड, आप एग्जैक्टली यहीं पे देखते हो. सो दिस इज़ वेयर दे मोस्टली पुट ऑल द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और यहीं पे आपकी नोटिफिकेशन होनी चाहिए बिकॉज दैट्स मोर एफिशिएंट. तो अगर आप Huawei या Samsung या स्टॉक एंड्रॉइड देखो तो उसके अंदर नोटिफिकेशन इसी एरिया पे होती हैं. लेकिन ओप्पो के अंदर दिस वेरी वैल्यूबल स्पेस इज़ बीइंग यूज्ड बाय टॉगल्स जो कि आप नीडली नोटिफिकेशन जितना इस्तेमाल नहीं करते. नोटिफिकेशंस आर वे मोर इम्पोर्टेंट. सो व्हेन यू स्लाइड डाउन टू सी योर नोटिफिकेशंस योर आइज मूव अराउंड अ बिट टू एडजस्ट. एंड अनदर प्रॉब्लम इज़ कि नोटिफिकेशन जो होती हैं वो ऑटोमेटिकली एक्सपेंडेड होती हैं इस फ़ोन के अंदर. सो इफ़ यू गेट अ लॉन्ग ईमेल और अ लॉन्ग टेक्स्ट द एंटायर स्पेस इज़ गोइंग टू बी यूज्ड टू शो दैट वन नोटिफिकेशन. So overall you get to see less of what apps are sending you notifications. So I feel like they need to fix this. एक अच्छा अपडेट ये होगा कि remove one row of toggles and put the notifications there and stop notifications from automatically expanding. I think इससे कलर OS जो है वो काफ़ी ज़्यादा improve हो जाएगा. Speaking of things जो कि मुझे इस फ़ोन में नहीं पसंद, एक और प्रॉब्लम जो है वो ये है कि there is no fast charging. जब आपके फ़ोन के अंदर एक बड़ी बैटरी हो लाइक अ 5000 mAh बैटरी, यू नीड फास्ट चार्जिंग मोर देन एवर बिकॉज इफ़ यू आर चार्जिंग फ्रॉम 0 to 100% इट्स गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम टू चार्ज. इस फ़ोन के अंदर इट टेक्स अराउंड 3 hours टू चार्ज फ्रॉम 0% to 100%. सो आई वुड रिकमेंड चार्जिंग इट ओवर नाइट while you sleep to avoid this. So overall I do really like the performance of this phone even with the problems. Again, I don't think any other phone is giving you such great performance in this price. So if you want to get the best performance at the least price, I think you should go for this phone. इसके अंदर एक क्वाड कैमरा सेटअप है एट द बैक जिसके अंदर एक 48 मेगापिक्सल लेंस, एक 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर्स हैं. फंक्शनैलिटी वाइज द कैमरा इज़ ग्रेट. The wide angle lens allows you to take much wider photos without any distortion. So अगर आप किसी लैंडस्केप की फ़ोटोज़ ले रहे हो या आप किसी ग्रुप की फ़ोटोज़ ले रहे हो and you want to include more people, the wide angle lens is going to be a huge help for that. जो depth sensors हैं वो भी बिल्कुल perfectly work करते हैं and you get a really awesome portrait mode on this phone. However, I'm not very satisfied with the colors in the photos. The saturation seems a bit less and the colors look washed out. लेकिन on the other side there's a 16 megapixel front camera which actually takes really great photos. उससे मैं काफ़ी satisfied हूँ. It takes photos with a lot of clarity, colors बिल्कुल perfect हैं, portrait mode is awesome. So the front camera is really great. Overall, I'd say you can take great photos with the camera, लेकिन बाद में I think you need to download an app like Snapspeed to fix the colors. So that's pretty much it. As a power user, I do really like the phone. I think अगर आपको एक फ़ोन चाहिए for performance, for gaming or for battery, तो then this is the best phone that you can get at the least price. Thank you for watching. Please subscribe for more videos and I'll see you in the next one. Peace.